Very good morning, children. Let's continue with our chapter number 14 of Social, Introduction of the Continents Africa and Asia. We were studying Asia and this is the fourth video. Let's begin from our page number 118. We studied about the Asian climate, the animals, the vegetation, etc. Now we are going to see this table. Saltwater lakes and sweetwater lakes are given here. Few are lakes in Asia which are saltwater lakes, as I taught you about the Dead Sea, which is near Jordan, and the Chilka Lake, Pulicat Lake, Caspian Sea. All these are saltwater lakes. Saltwater lakes means the water is saline in these lakes. Then there are sweetwater lakes. That means the water from the lakes which can be used in our activities, in human activities, like Lake Baikal, which is in Kazakhstan, Vular Lake in India, Dal Lake in India, Devar Lake in India, Tonlep Sap in Cambodia, and Dongting Lake in China. As per the map of Asia, pictures of few different types of vegetation are also given here. Now we have to write the name of the countries below it. Remember, few of them were there. First one is evergreen forest, then there is mahogany also. There are thorny bushes also, cactus and thorny bushes we can see in two pictures. Then there are other trees as well which are near the coast, sea coast. Then there are conical shaped trees. So such trees we have already studied in our earlier standards. You have to just write down the names below these pictures. Okay, so these are all the vegetation of Asia. Earlier we also saw the map of animals of Asia. Here they have given the whole animal kingdom: animals of the cold region, domestic animals, animals of hot deserts, and aquatic animals. So these are different categories found in Asia. This also you'll have to learn properly. Then there are people of Asia. 50% of the total world's population resides in Asia. That means we can understand how big the continent is or how populated the continent is. The people of Northern Asia are non-vegetarian. That means they have, chicken, meat, etc. in their food diet. The people near coastal areas eat seafood, and the people living in the seasonal climate use wheat and milk. The map given below shows the picture of the people of Asia. The clothing of people of Asia is shown here. Write the name of the country in the box given below. In this map, we can see the people of different countries of Asian continent. Okay, we have to write down their names. You remember I told you you have to already prepare a map of Asia political with the names of countries. So that's the same map. We will come to know that people wearing different clothing, they belong to which country once you write down the names of that country in a political map. And here there is a table provided below. You have to fill that table. So all the names which are different countries, जहाँ पे भी लोगों की पिक्चर्स हमको दिखाई गई है, यहाँ जहाँ पे एरो किए गए हैं नीचे, वहाँ पे तुमको लिखना है कि वो जो पिक्चर्स बनाए गए हैं, लोगों के दिए गए हैं, वो किस किस डिफरेंट कंट्रीज को बिलोंग करते हैं. ओके, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द नेम्स ऑफ दोस कंट्रीज. अंडरस्टूड एवरीवन? जैसे कि हमको दिख रहा है इंडिया के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, चाइना के लोग हैं. यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हमको 3-4 कंट्रीज जितने नीचे डैश दिए गए हैं, जो मैंने एरोज बनाए हैं, वो कंट्रीज के आपको नाम लिखने हैं. ओके, further we will study about the housing of these people. Observe the pictures given below and find out where in Asia do we find such houses. Use a map and write the information in your notebook. Now here different kind of houses are there. हमने earlier standards में, छोटे standards में पढ़ा है. Different houses होते हैं, कच्चा house, पक्का house, huts, bungo, etc. So these different types of houses are given here. You have to write down their names.
Then neighboring countries of India. The group of countries, that is India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar and Sri Lanka, is known as the Indian subcontinent. Its strategic and geographical location stands distinctively in Asia. That means it is very important in Asia. These group of countries which are near India and means India और उसके neighboring countries जो हैं, they are called Indian subcontinent, and strategically and geographically their location is distinctively important. Let's study each few of them in detail. Pakistan is our neighboring country. It declared itself as an Islamic nation after it attained independence along with India. Its capital is Islamabad. Khyber Pass, which is in the Hindu Kush range, is located in Pakistan. The perennial river Sindhu has enabled the Green Revolution in Pakistan. Cotton is the most important crop of Pakistan. Next is Bangladesh. Bangladesh is one of the densely populated countries of Asia. Bangladesh is formed of delta and alluvial soil. The Ganga and the Brahmaputra, the major rivers of Bangladesh, are the major waterways in Bangladesh. So Ganga and Brahmaputra, they are perennial rivers, very long rivers of Bangladesh. They are major rivers, and because of being deep and long, they are useful as waterways in Bangladesh. Rice and jute are produced in abundance in Bangladesh. The capital city is Dhaka, and it is famous for its jute industry. Jute, you understand, right? जिससे वो बोरी बनाई जाती है. That's called jute material. Dhaka is very famous for that jute industry. Next is Nepal. Lying in the Himalayan ranges, Nepal is a landlocked country. Landlocked, you understand? चारों तरफ जिसको high mountains है. पूरे लैंड ने उसको लॉक किया है. Such is that country. Its capital city is Kathmandu. 40% area of Nepal is in the forest, and thus only 16% of land is cultivable. Crops grown here are rice, tea, cotton and cardamom. Cardamom means इलायची. तो इस तरह के क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होते हैं. बहुत कम proportion में ग्रो होते हैं because most of its land is mountainous region. Only 16% land is cultivable. Next is Bhutan. The Britishers called it the land of the thunder dragon. It is surrounded by mountains and hills which hampers its development. तो because it is surrounded by hills and mountains, उसका ज़्यादा development नहीं हो पाया, रुक गया. Hampers its development मतलब उसका development रुक गया. Still Bhutan is developing with the help of India. Buddhism is a major religion followed here. Yak is the distinct animal found here. Thimphu is its capital. Next is Sri Lanka. This island was known as Ceylon and Sinal Dweep in the past. The Pak Strait in the north and the Gulf of Mannar in the west separates it from the mainland of India. Colombo is its capital. There are total 104 rivers in this small island country. River Mahaveli is the biggest river. पाक स्ट्रेट इज द सेम स्ट्रेट जिसको हम हिंदी में राम सेतु भी बोलते हैं, जो भगवान राम के बंदरों ने बनाई थी इंडिया से श्रीलंका पहुंचने को. सो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेट इट इज इजी टू ट्रेड विथ श्रीलंका and it is easy for Sri Lankans to connect to India. Sri Lanka experiences hot and humid climate because of its nearness to the equator. The main agricultural product is rice and tea. It is known as the Ratan Dweep or the Pearl of the Indian Ocean. People speak Sinhali and Tamil. Next is Myanmar. It is the land of the Arakan mountain ranges and the Irrawaddy river. Myanmar produces mineral oil and India purchases it. Because of the adverse climate, industries have not developed much here. Its capital was Rangoon and now Naypyidaw is its capital. Waterways are more important in Myanmar. It produces rice in abundance. So, mineral oil is produced and India is purchasing in mineral oil from Myanmar. So because the adverse climate is there, बहुत अच्छा climate नहीं है वहाँ पे, industries ज़्यादा develop नहीं हो पाई हैं. Capital is Rangoon. I mean it was Rangoon and now it is Naypyidaw. And because there are perennial rivers, waterways are more important and rice is grown in abundance.
Now children, here we are provided with exercise where answer the following questions in short is given. That means 2-line answers are there. Then collect information with the help of a physical map of Africa and fill in the columns. Deserts fill करने हैं, plains and highlands ये already हमने पहले कर लिया है, so there is no need to write again. Then with the help of a political world map, we will write down these names or in these tables. Names of any 5 countries of Asia having a coastline, including India एक है उनमें से 5 नाम हमको ऐसे लिखने हैं. Now, in which direction of Asia do these continents lie? Europe lies to which direction? Africa, Australia, etc. ये हमको direction लिखना है. For example, जैसे Europe lies to the west of Asia, northwest. इस तरह से हमको अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखना है. Which direction do they lie? Now here is the list of freshwater lakes of Asia and Africa. ये भी already एक list दिया हुआ था, जो हमने already देखा था. You can write it in your fair book. Next is make a list of the countries of Asia with the help of political map. ये भी हमने political map बनाया है, तो हमको वो countries के नाम लिखने हैं. Now there are true or false. All these questions children you have to write in your fair book. जो भी आप मैप बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया एक एनिमल का मैप आपको बनाना है, एक पॉलिटिकल मैप बनाना है जिसमें सारे कंट्रीज के नाम आपको लिखने हैं, और एक आपको फिजियोग्राफिक मैप बनाना है जिसमें आप रिवर्स बनाएंगे एंड माउंटेन्स बनाएंगे. रिवर्स का मैप भी अलग से दिया हुआ है इस चैप्टर में, वो आपको सेम टू सेम बनाना है. एक आप माउंटेन्स का मैप बनाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ. Identify me is also given. Then answer the following questions in short. They are very short, like name the hot and cold deserts of Asia. ये हम चैप्टर पढ़ेंगे, वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे तो हमको आ जाएगा. You can definitely take help of Google. ये सेम मैप आपको बनाना है बच्चों, एशिया का एक पॉलिटिकल मैप लेके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. आई होप इट इज इजियर नाउ टू अंडरस्टैंड. इस तरह से हम लीना रिवर बनाएंगे. ओके, आप देखेंगे कहाँ से स्टार्ट होती है. ये आपको देखना है 140 वाला जो लॉन्जिट्यूड है वहां से स्टार्ट होती है. इस तरह से हमको लीना रिवर बनाना है. ठीक है, इस तरह से ऑल दीज रिवर्स यू हैव टू ड्रॉ इन द मैप. आई एम जस्ट ड्रॉइंग फ्यू ऑफ देम सो दैट आपको आइडिया आए किस तरह से हम अपने एशिया के पॉलिटिकल मैप में बनाएंगे. This was Wango. Then this river is Yangtze. Okay. Always remember, कोई भी रिवर हमेशा किसी माउंटेन से स्टार्ट होती है एंड हमेशा किसी भी माउंटेन से स्टार्ट होके कोई भी ओशन या सी में जाके एंड होता है. As we can see here, the arrows I have drawn. These rivers they ओरिजिनेट फ्रॉम अ स्नो कवर्ड माउंटेन. हम देख रहे हैं कि हिमालय से ये निकलकर एंड जाके सी बाउंड्री में, आई मीन सी कोस्ट में, ओशन में मिल जाती है. अंडरस्टूड? लाइक दीज यू हैव टू ड्रॉ अदर रिवर्स इन योर एशिया पॉलिटिकल मैप. ओके children, here you can see I have tried to draw these things here. Mountains, इस तरह से आपको माउंटेन रेंजेस बनाना है जैसे मैंने इंडिया के ऊपर बनाया है. यू कैन मेक यूज ऑफ अ ब्राउन कलर्ड पेंसिल. मैंने ब्लैक से इसीलिए बनाया ताकि स्टैंड आउट आपको दिखाई दे. ठीक है. नाउ दीज माउंटेन्स वी ऑलरेडी नो, दे आर कॉल्ड हिमालयन माउंटेन रेंज. ओके, हिमालयन का मीनिंग, हिमालयन कंप्लीट माउंटेन रेंज उसको क्यों बोलते हैं आपको पता है. ओके, दिस माउंटेन रेंज इट इज हिमालयन माउंटेन रेंज. ओके, और यहाँ पे ये जो माउंटेन्स है, सॉरी ये वाले जो हमने माउंटेन्स बनाए हैं, दीज आर कॉल्ड हिंदू कुश एंड सुलेमान माउंटेन रेंज. जैसे इंडिया और यू नो नॉर्दर्न कंट्रीज लाइक चाइना, तिब्बत के बीच में हिमालयन माउंटेन रेंज है, इसी तरह से पाकिस्तान और उसकी जो नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज है उसके बीच में ये हिंदू कुश एंड सुलेमान माउंटेन रेंज हमको
बनाना है. आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स. प्लीज रेफर द एटलस और other physical map available in the Google to know more about the different mountain ranges you can find here. Okay, these are the two large mountain ranges of Asia. तो इस तरह से हमको अपने मैप में बनाना है. I hope children it is clear to you now. तो आपको ये तीनों मैप्स अपने बनाकर और अपनी फेयरबुक में लगाना है. एक तो जो अफ्रीका का हमने बताया था, कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड नेबरिंग थिंग्स, जो भी कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट्स है, सी बाउंड्रीज है. इन द सेम वे यहाँ पे भी पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया. पॉलिटिकल मीन्स कितने कंट्रीज हैं एशिया में, जो कंट्रीज के नाम हैं, सी बाउंड्रीज, नेबरिंग कॉन्टिनेंट्स एक्सेट्रा. एक मैप आपको फिजिकल बनाना है एशिया का, जिसमें रिवर्स होंगे एंड माउंटेन्स होंगे. एक आपको एनिमल्स वाला एशिया का बनाना है. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? यहाँ पर बच्चों हमको फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका भी दिया है, जिसमें अफ्रीकन रिवर्स भी हैं. जिस तरह से मैंने आपको एशिया के रिवर्स बताए थे, इसी तरह से हमको अफ्रीका के रिवर्स भी बनाने हैं. अंडरस्टूड? ऑल दीज रिवर्स विच आर ड्रॉन हियर हमको सारे बनाने हैं. सो इन ऑल यू कैन काउंट अराउंड 5 मैप्स आर देयर. ये सारे रिवर्स हमको बनाने हैं. ओके. एंड जो 2 माउंटेन्स थे, किलिमांजारो, एटलस माउंटेन रेंज, वो भी हमको बनाना है, टेकिंग हेल्प ऑफ एटलस. So children, these places you have to mark on the map of Africa. रिवर्स वाले मैप में ही आप बना सकते हैं. ये वाले माउंटेन्स हमको बनाने हैं. जैसे हम यूजुअली माउंटेन्स बनाते हैं, यू कैन use brown color pencil for drawing these mountains. So we end our chapter here. Thank you so much everyone. Stay home and stay safe.